And let me show you the my screen. So today's topic is CSS. I will be discussing um, insights of CSS, a lot of version details, because बहुत confusion है the CSS को लेकर के कि भाई तीन CSS के versions हैं, what we are actually using and use, like फायदा क्या है, why we use CSS, right? Past streams में we have talked quite a lot about HTML. HTML के हमने basics cover करे थे. We have created a project और वहाँ पे हमने कुछ भी CSS का use नहीं करा था. That was the actual challenge also कि आपको कोई CSS use नहीं करना है and you have to create a nice portfolio of yourself. So अगर आपने वो नहीं देखा है तो HTML वाला लाइव देख सकते हो जहाँ पे हमने साइट प्रोजेक्ट रेडी किया था और उसका कोड GitHub पे मिल जाएगा. सो कामरान सिंह रिस्पॉन्सिव करना है, प्रॉब्लम आता है सर, वो पार्ट अच्छे से करा दीजिएगा. यस, रिस्पॉन्सिवनेस, या दैट्स really a thing why we use CSS responsive बनाने के लिए आपके वेबसाइट्स, आपके वेब पेजेस को, बिकॉज इन टुडेज डेट अब क्या हो रहा है, वी नीड वेब एप्लीकेशन जो नेटिवली हर जगह चल रहे हैं. और डिवाइसेस का ऐसा है कि रोज कोई ना कोई साइज का डिवाइस आपका बन जाता है. What is your GitHub profile? Palak is asking. So my GitHub profile is Advox. So if you just search Advox on your Google Chrome or any other browser, you will find all my links. Yeah. So थोड़ा सा mention करता हूँ कामरान आपके question को. Responsive बनाने के लिए, I can either you can go for your media queries आप लगा सकते हो, या फिर you can use some CSS framework to make your life easier. So अगर आप एक CSS framework use करते हो, for example जो सबसे ज़्यादा famous है Bootstrap, so that will help you a lot. So Bootstrap लगा करके you can have, yeah, correct, Bootstrap. So Bootstrap is very famous CSS framework and it's open source, I guess. So, but open source भी नहीं है तो, but इसका documentation बहुत अच्छा है. But I believe that is open source. But इसका documentation बहुत अच्छे से maintained है. So you can just go to the doc and start using it. All right. So let me share the screen. Just a second. I'm opening the slides. One second. Programming today's web and Mr. CSS. CSS Canada we are going to learn. This is the very first slide of this is the very first stream of my CSS. So पहला वाला slide आज discuss करेंगे. So as usual जैसा हमारा रहता है. Yeah. Okay. Yes sir. I will surely do it, but media query से भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, वो बता रहा हूँ. Okay. Yeah. Definitely. So cool. Okay, so this I believe my screen is shared, and let me open the same thing on my phone also, ताकि मैं आपकी कोई chat miss ना करूँ. Chat is your best friend. We keep interact a lot in chat box. So let me give me a second. Let me open this in my phone also. So I will be sharing screen. तो मैं उस वाली screen पे रहूँगा from my laptop, and I will keep on tracking the chat from my phone. Okay, cool. So I'm placing the phone here. Okay, excellent. All right, so this is the very first slide. Again, it's a web dev beginner sort of course जहाँ पर हम HTML के बाद CSS को cover करते हैं. HTML is the lesson number 1. Again, if you haven't watched that, तो आप 5 streams में जाकर के check कर सकते हो HTML वाले part को. And then some sort of learning objectives. This particular slides में what I'm going to tell you, and probably this is the target of my first CSS stream. यहाँ पर हम I will be telling you the prerequisites of this thing. Prerequisites ज़्यादा कुछ खास नहीं, so don't worry कि भाई कुछ prerequisites भी है इसको करने के लिए. So ऐसा बहुत बहुत कोई hard coded prerequisite नहीं है, बस एक important है कि आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए. You can create a simple HTML structure, so that will be good enough to start. Then I will be talking about course objective क्या है, then system requirements आपके पास क्या चाहिए. I will introduce you with the CSS, कुछ applications दिखेंगे, and then finally we will see the versions. और last में I will show you some software that you can install and start working on your CSS. Okay, so let's see the prerequisite. The first thing you should know, very basic, you should know using your computer, using web passively,
बेसिक वर्क इन्वायरमेंट सेटअप होना चाहिए. सो आपके पास एक ब्राउजर इंस्टॉल्ड होना चाहिए टू एक्सेस एनीथिंग. यू शुड हैव अ टेक्स्ट एडिटर टू वर्क ऑन. तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए बेसिकली. So the main, जैसे मैंने कहा था कि creating a basic HTML document will be good enough to start. All right. So can I assume कि we know to create a HTML document? Can I assume that? Yes. Quick yes or no in the chat. इसके बाद JavaScript basic to advanced. Yeah. I guess वो कल ही है. Today's Thursday, right? So yeah, Friday को हम करेंगे. Yeah. Yeah. Cool. Awesome. That's really awesome. So course objective जो इस particular course के अंदर हम deliver करते हैं, it is your basics of CSS कि होता क्या है, आप कितने types के CSS होते हैं, आप कैसे implement कर सकते हो, क्या उनमें differences हैं, किसकी priority highest है. तो ये sort of चीज़ें CSS के बारे में बात करेंगे सबसे पहले. Then we have selectors, then we have some formatting styles. आप अपने किसी भी चीज़ को format कर सकते हो, right? फिर display के बारे में बात करेंगे. डिस्प्ले को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जेड इंडेक्स वगैरह. सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इनसाइड दिस डिस्प्ले वाला पार्ट. या इट्स अ 1 आवर वेबिनार. एंड जनरली हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वन, देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड थ्री फोर ऐसे. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ whatever we are starting. Yeah, right, it's a 1 hour. Yes, definitely need that. Cool. एंड देन डिस्प्ले के बाद, डिस्प्ले तक एवरीथिंग इज सोबर. उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ मूव करते हैं कि जहाँ पे आई विल टेल यू दी अबाउट एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस. बहुत ही सिमिलर सी टर्म्स लगती है एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे कौन सी लगाना बेटर है. एनिमेशन कहाँ पे लगाना चाहिए और ट्रांजिशन कहाँ पे लगाना चाहिए. सो डेफिनेटली सारी चीज़ें एक एक 1 आवर के अंदर कवर अप नहीं होंगी. सो दैट्स व्हाई वी नीड सम सीक्वेंस सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड फाइनली द फाइनल टॉपिक एक्चुअली होता है इसका कि जहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड लेआउट और मीडिया क्वेरीज की बात करते हैं. बिकॉज फ्लेक्स बॉक्स विल हेल्प यू अ लॉट टू पुट थिंग्स इन 2D स्ट्रक्चर. बट ग्रिड आप सॉरी इन 1D स्ट्रक्चर. फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 1D स्ट्रक्चर में आप इजीली चीज़ों को रख सकते हो. बट इफ यू गो फॉर ग्रिड यू कैन हैव द 2D पार्ट ऑफ your media queries. So it's like डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज. अगर आपका स्क्रीन साइज कितना है उसके हिसाब से आप मीडिया क्वेरीज को एक्सेस कर सकते हो. सो मीडिया क्वेरी इज नॉट अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू. सो बट या, cool. Let's talk about some system requirements. I will keep okay, yeah, I will keep it short because आज का वेबिनार बहुत लॉन्ग नहीं रखेंगे. थोड़ा सा कुछ और मीटिंग है. सो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर सॉफ्टवेयर की साइड से. यू नीड अ गुड ब्राउजर, मॉडर्न ब्राउजर यूज करना. डोंट यूज पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर डाउनलोड करके शुरू मत हो जाना. ओके, जस्ट टू चैलेंज योर स्किल्स कि मैं पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्या क्या कर सकता हूँ. डोंट डू दैट. यूज अ मॉडर्न वेब ब्राउजर टू टेस्ट योर एप्लीकेशंस, राइट. आई विल हाईली सजेस्ट गूगल क्रोम बिकॉज मोस्ट ऑफ द अगर अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज कर रहे हो फिर आप कोई एक नया फ्रेमवर्क ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें टेस्टेड होती है गूगल क्रोम के ऊपर बिकॉज इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्राउजर. So Google Chrome is the best option to start with. Okay. Then you need some text editor. चाहे वो आप Notepad plus plus pick कर लो. I think Notepad plus plus gives you suggestions वगैरह कि भाई CSS अगर आपको लिखना है. Visual Studio Code. Yeah, that's also great. I think VS Code is great enough to start. Notepad plus plus भी okay, VS Code भी okay, Sublime भी सब कुछ okay. एक टेक्स्ट एडिटर आना चाहिए. सी वो जो इंटेलिजे होता है वो हमें जो सजेशन देता है that's not important. Okay, even you can use my text editor. मैंने कई टेक्स्ट एडिटर बना दिए हैं. all those text editor you will find on my GitHub. सो मैंने सी लैंग्वेज में ही टेक्स्ट एडिटर बनाया था और आप उसको भी यूज कर सकते हो. सो दैट्स रियली ऑसम. ओके, बट इफ यू वांट दैट इंटेलिजे और वो टेक्स्ट हाइलाइटिंग अगर आपको चाहिए तो गो फॉर VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस. You can go for VS Code, no issue. VS Code will be good enough. हार्डवेयर साइड से अगेन बहुत ज़्यादा कोई
या सो हार्डवेयर साइड से भी बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक बेसिक सिस्टम होना चाहिए, चाहे विंडोज़ का, लिनक्स का। अगर इफ आई आस्क यू क्विकली, कैन यू राइट विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग? एवरीवन, which operating system you are on? You use Linux, you use Windows, uh, for development, of course. Windows 11. Lot of Windows fans. No one use Linux. Again, Windows. A lot of Windows. Wow. Why no one use Linux? Downloading it. Kali. Yes. Now some good words. Okay, मेरे को लग रहा है we should have a Linux वाला live streams ताकि मैं आपको familiar कर सकूँ Linux environment के साथ. Too hard for me. Why? So you start using Ubuntu. Okay, क्योंकि वहाँ पे you will find a nice GUI और plus Linux का भी रहेगा. अभी starting से don't go for Mac. Yeah, I'm taking this live from Mac, but I will never suggest to go for Mac. Uh, a lot of reasons. Don't go for Mac. Just buy a nice, decent configuration का laptop and install Linux on it. Or even if you go with the technology, आज का जो modern time है, वो it's like buy any sort of configuration and purchase a cloud. Okay, आप AWS services use करना start कर लो and वहाँ पे एक Linux operating system you can buy और उतना ही आपको pay करना होगा जितना आप उसको use कर रहे हो. So that's I think that is the future. Okay, no one is going to put a lot of money on buying a system. Okay, आप एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो ताकि आप रिमोट एक्सेस कर सको और सब कुछ स्मूथली रन हो जाए, बस उतना ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है. इफ़ यू वांट बिगर रैम, बिगर मेमोरी साइज, पे फ्यू एक्स्ट्रा मनी और आपको मिल जाएगा. So someone is asking, what is like, don't write initials, which is the best, Linux or Windows for coding? I will highly suggest to Linux. विंडोज के अंदर आई मज़ा नहीं है टू फॉर डेवलपमेंट थिंग. if you want to enjoy coding, go for Linux. और Linux के अंदर भी try to write in terminal, otherwise it will sound same, everything will be same. Okay, a lot enough talking about Linux, let's come back to the topic. Yeah, let's come back to the topic, the CSS. So हम hardware requirements की बात कर रहे थे, so any system you can pick, but I highly suggest Linux. और but if you want to do CSS तो कोई चल जाएगा, Windows 7 और हायर सब चल जाएगा. ओके, रैम के लिए 2 GB रैम भी विल बी गुड इनफ, बट आई गेस मार्केट में अब 2 GB रैम्स के लैपटॉप्स नहीं अवेलेबल होते, तो 4 GB रैम, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 4 GB रैम लिखा है. सो 4 GB रैम आपके लिए विल बी गुड इनफ टू स्टार्ट. Cool. And a quick announcement इसी के साथ, we have a coding competition. हम एक coding competition start कर रहे हैं. स्टार्ट नहीं कर रहे, बेसिकली इट्स अ संडे को 1 या फिर 1.5 hour का इवेंट होगा. सो आई रियली वांट टू यू ऑल टू पार्टिसिपेट एंड बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे. एंड इफ यू या एंड जो विनर होगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा. इट विल बी ऑनलाइन, जैसे अभी आप एक लाइव स्ट्रीम अटेंड कर रहे हो वैसा ही वो कंपटीशन होने वाला है. सो इट विल बी ग्रेट फन. आई कैन गिव यू a form link. Give me a second. फॉर्म लिंक आप फिल आउट कर सकते हो. 2-3 क्वेश्चन ही उसके अंदर आंसर करने के लिए, लाइक योर फुल नेम, आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन रिमेंबर. फुल नेम है और लिंक्डइन प्रोफाइल है, लाइक आई बस इतने से 2-4 चीज़ें. आई नो HTML CSS and basic of JavaScript, उतने में क्या, yeah, you can use JavaScript to solve the problem. See, the main thing in CS world, you should be a good problem solver. Tech stack आना is not the goal. Okay, your goal should be to be a good problem solver. अगर आप problem solve कर सकते हो,
You can do anything. Okay, if you even just know C language, तब भी आपका काम चल जाएगा. अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो जावास्क्रिप्ट में कोड कर सकते हो. No issue. Okay, so let me give you the form link I found. Yes, sir. So let me paste in the chat. And yeah, cool. So I give you 2 minutes. You can fill out this one, or you can copy this link in your clipboard. Um, and even let me give you one thing, जो कि 2 मिनट में कर सकते हो, which is you can join my community group. Okay, WhatsApp पे we have a community group. Let me share that also. उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप मिस भी कर जाते हो, सो स्टिल यू कैन गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन और वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो. सो दैट्स द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. ओके, आई थिंक वो ये काम आप 2 मिनट में कर सकते हो, बिकॉज यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड यू विल बी जॉइंड. ओके, सो यू हैव 2 minutes. Join. Done. Great, great. Come on. क्लिक नहीं हो रहा. I think a lot of people join. What you can do, you can copy the text or paste and then paste in your browser. Okay, अगर वो click नहीं हो रहे, so you can copy the text and paste to your browser. So same चीज़ है. Done. Phone number. I guess phone number is not that important. फोन नंबर नहीं है आपके पास सबके कर, बट आई थिंक दैट इज मार्क्ड रिक्वायर्ड. यू कैन पुट योर गार्जियन का फोन नंबर आप लिख सकते हो. Probably no one going to disturb you or ring you. I think it's just for the validation sort of thing. Yeah. Okay, come on, 2 minutes over. Let's come back. A lot of people joined in this time span. Wow, you guys are really, really fast. Cool. So let's go to the next slide, which introduces you with the CSS. So this particular live stream is about the basic to advanced. So हम यहाँ से basic वाली चीज start कर देंगे and धीरे धीरे हम advanced की तरफ चलेंगे. Okay, I'm not going to bombard all those things in the one day. Don't worry. So the full form of the CSS is Cascading Style Sheet. Okay, so basically it's a design language, or you can say it's a style language, right? So इसके full form ये है Cascading Style Sheet, CSS. Okay, and HTML आपका 1991 में ही आ गया था. So अभी हम बात करेंगे इसके versions के बारे में. So first CSS का जो वर्जन था 1994 के बाद आया था. So, बट बहुत पहले से ही स्टाइलिंग शीट्स पे या स्टाइलिंग लैंग्वेज पे काम चल रहा था, बट कोई भी ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं थी या फिर रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी. तो CSS 1 या फिर आप कह सकते हो CSS लेवल 1 वाज द वेरी फर्स्ट जो रिकॉग्नाइज की गई थी. ओके, W3C के थ्रू. Okay, so CSS stands for Cascading Style Sheet. It's a design, or you can say style language. Basically, it describes how your HTML elements are to be displayed on the screen. तो वो स्क्रीन पे कैसे दिखना चाहिए. If you see this particular page, ये भी एक HTML का पेज ही है जिसका बैकग्राउंड हमने थोड़ा ब्लैक सेट कर दिया. There are some cool components. यहाँ पे आपके पास एक साइड बार है, हेड बार है. So ये एक चैट बॉक्स है. तो ये सब चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए, आपकी चार्ट कैसे शो होनी चाहिए, आपका नाम कैसे शो होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर सेट इन अ CSS. ओके, सो दैट्स योर CSS जो इस पेज को थोड़ा सा अपीलिंग सा बना रहा है. यू वांट टू स्टे ऑन दिस पेज, you want to see things on this page, right? Then we have some it is used to make web pages presentable. The same thing that I just told you, it make your pages a lot presentable, right?
जस्ट थिंक अबाउट, अगर ये सेम पेज एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होता और चैट बॉक्स कहीं इधर उधर असेंबल सा होता, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं होता, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता इस पेज से इंटरेक्ट करना, ये लाइव स्ट्रीम अटेंड करना, राइट? बट थैंक गॉड वी हैव CSS, एंड उसने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेटल करा हुआ अपने पेज पे, राइट? इवन इफ यू आर ऑन अ मोबाइल फोन तब भी ये वेब पेज काम कर रहा है, इफ यू आर ऑन अ लैपटॉप तब भी ये वेब पेज अच्छे से काम कर रहा है. सो या, वी कैन थैंक्स फॉर CSS or CSS developers. Yeah, cool. And the file extension is always .css, right? जैसे HTML document का जो extension होता है that is .html, so इसका रहता है .css. Cool. So let's see some applications of CSS. Application of CSS के अंदर आएगा the first thing which really important for CSS कि भाई HTML के अंदर attributes लिखने से बच जाते हैं. We will not write a lot of attributes in your HTML tags, right? That's a very bad looking. आपका पूरा HTML का document बहुत ही बुरा लगता है if you add a lot of attributes to one single tag, right? And especially when you're dealing with style. So अगर आप एक style या फिर अगर आपको पता है inline CSS के बारे में, if you start writing inline CSS only, वो भी बहुत बुरा लगता है देखने में. Okay, so first point यही mention करा गया है कि discard writing HTML attributes which makes page loading slower. Yes, ये भी एक reason है कि भाई आपका जो पेज है वो बहुत slow load होगा अगर if you put a lot of attributes in one HTML tag. Okay, page loading is very important, right? अगर आपका पेज 3 सेकंड के अंदर लोड नहीं होकर के आया, so you will most of the user, I can't say for you, but most of the user drop that website. Okay, it's analytics कि अगर आपका पेज 3 सेकंड में लोड नहीं होता है, user will drop that page and just exit. Okay, second applications of CSS is maintainable and scalable code. So maintainable कैसे रहेगा? um, if you have one single sheet, you can add anything to it. So ताकि अगर आपने वो सिंगल शीट को बहुत सारे मल्टीपल HTML पेजेस के साथ कनेक्ट करा हुआ है, एक शीट पे चेंज करोगे तो हर जगह पे चेंज होने आपको शुरू हो जाएंगे, लाइक यू विल सी ऑल दोज डिफरेंस इन ऑल दोज HTML डॉक्यूमेंट. सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट. वही सेम चीज थर्ड पॉइंट में भी लिखी हुई है. सेम स्टाइल शीट कैन बी यूज विद मल्टीपल HTML पेजेस. So that's very important and helpful. अदरवाइज आपको सेम CSS लिखना पड़ेगा हर एक HTML टॉप के लिए, राइट? डेवलपर के लिए मुश्किल है. तो स्टाइल शीट बनाने से इट विल बी वेरी इजी. एंड देन इट्स मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन. जैसा मैंने अभी मेंशन करा, ये सेम पेज डेस्कटॉप पे भी बहुत इजीली ओपन हो रहा है, बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, एंड सिमिलरली फोन पे भी बहुत अच्छे से ओपन हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है. सो या, अगेन थैंक्स टू योर CSS. मोबाइल फ्रेंडली आप बना सकते हो. एंड यही रिक्वायरमेंट है आज के डेट की कि आप किसी भी साइज के डिवाइस पे अगर आप अपने वेबसाइट को ओपन करो, इट शुड वर्क. चाहे वो एक टैबलेट हो या फिर वो एक डेस्कटॉप हो. अब डेस्कटॉप के भी बहुत सारे साइज होते हैं, एक 13 इंच का मैकबुक है या फिर एक 15 इंच का है, मतलब फुल साइज का है. सो अ लॉट ऑफ स्क्रीन साइज वी हैव. इवन अब तो फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं, सो फोल्डेबल फोन्स पे भी आपकी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए. A lot of headaches you have, right? So CSS developer के पास बहुत सारी चीजें हैंडल करने के लिए. Cool. Now let's talk about some versions of CSS. Um, and everything was okay. Like any doubt, any question till now, or let me know if I'm going way too fast. Yeah, it's okay. Any question? Cool. That's awesome. Great. So let's talk about this thing. इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई CSS के कितने वर्जन्स आ गए हैं, कब कौन सा वर्जन आया था.
अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, फ्यूचर में कौन सा वर्जन आएगा, राइट? बिकॉज इफ वी स्टार्ट द टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ बातें पता होनी चाहिए उसके बारे में. दिस विल मेक यू मोर इंटरेस्टेड इनटू द टेक्नोलॉजी, बिकॉज आप कनेक्टेड फील करोगे कि ओके जो अभी चल रहा है आप जिसको यूज कर रहे हो, हाउ मच यू नो अबाउट इट. So CSS version 1 was the very first specification to become an official W3C recommendation. Okay, so CSS level 1 बोलते हैं इसको. Okay, so W3C, the वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. सो ये एक ग्रुप है जो अब हर एक वेब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैनेज करता है, और आप कह सकते हो मेंटेन करता है, right? Your HTML doc or CSS doc, all these things. So W3C. Okay, so सबसे पहले CSS वर्जन या फिर लेवल 1 को ही रिकमेंड किया गया था from this consortium, and it was published in December 17, 1996. काफी ज़्यादा पुराना है. Yeah, uh, yeah, a lot of time. And these are the original creators of the CSS1. And but the sad part is not the sad part, but W3C अब इस CSS version 1 को support नहीं करता है, because it's way too old. Okay, in this modern world we always need some updates. सो धीरे धीरे बहुत सारे अपडेट्स ऐड होते गए. CSS1 वर्जन सिर्फ और सिर्फ मेनली टेक्स्ट को लेकर के ज़्यादा फोकस था, बिकॉज उस टाइम पे जो वेबसाइट्स थी वो ब्रोशर सॉर्ट ऑफ दिखती थी. ओके, जो आपकी वेबसाइट्स थी 90s के टाइम में, वो मोर लाइक ब्रोशर्स जैसे ही दिखती थी. जैसे आज के टाइम पे आप एक फिजिकल ब्रोशर देखते हो, वैसे ही दिखती थी आपकी वेबसाइट्स. ओके, सो दैट्स वाई वहाँ पे टेक्स्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता था, एंड CSS1 के अंदर भी मैक्सिमम चीज़ें टेक्स्ट को लेकर ही थी. ओके, सो उसके बाद आया आपका CSS2, एंड इसको डेवलप किया गया W3C नहीं, और पब्लिश किया था 1998 के अंदर. ऑलराइट, एंड जो चीज़ें इसमें ऐड की गई, अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे मूव करने लगे थे, बिकॉज इस 1998 इसी के कुछ साल बाद आपका अमेजोन भी आ गया था, लाइक विद द ऑनलाइन लाइब्रेरी स्टोर. Cool. So yeah, so W3C ने इसको publish करा था in 1998, and it brings a lot of capabilities like absolute, relative, fixed position, like position sort of things यहाँ पर add हो गई. Okay, absolute position, relative position, fixed positioning of elements, and Z index. Okay, Z index आपको version 2 में introduce हो गया था. और द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया टाइप, तो मीडिया क्वेरीज की जो हम बात करने लग रहे हैं आज, तो वो CSS2 के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी. और कुछ कुछ चीज़ें और फॉन्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल फॉन्ट का शैडो, तो ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो गई थी CSS2 के अंदर. एंड अगेन CSS2 इज़ वे ओल्ड, तो वापस से W3C अब इसके कोड को मेंटेन नहीं करता, एंड नो वन यूज इट. ओके, या इसके बाद एक्चुअली 2.1 भी आया था, आई थिंक. या चलो ठीक है, मेंशन करा हुआ है यहाँ पे. 2.1 भी आया था, जो कि 2 के कुछ बग्स थे उनको सॉल्व करता है. बट 2.1 का ऐसे ही चला था कि कभी ये ड्राफ्ट में चला जाता है, कभी पब्लिश हो जाता है, कभी ड्राफ्ट में, कभी पब्लिश में. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ये CSS 2.1 को लेकर के. दैट्स वाई वी डोंट मच टॉक अबाउट 2.1. उसके बाद सीधा 3 के बारे में बात करते हैं. बट या देयर वाज 2.1 ऑल्सो. ओके, या बहुत सारी जगह पे नहीं मिलेगा 2.1, बिकॉज कभी ये बहुत ही अनस्टेबल सॉर्ट ऑफ था, कभी ड्राफ्ट में, कभी रिलीज्ड. सो या, okay, so it removes poorly supported or not fully incorporable features and add already implemented browser extension to the specification. तो जो features browsers में already add हो चुके थे उनको make use करता है instead of having a brand new one. So yeah, और but इसका final version, जैसे मैंने कहा कि back and forth जाता रहा, but इसका final version was out in 2011. But you know, if you talk about CSS3, so अब CSS3 क्या लेकर के आया है, थोड़ा सा, because HTML भी ग्रो कर रहा था, HTML भी ग्रो कर रहा है और CSS भी ग्रो कर रहा है.
तो CSS3 brings you something known as modules. तो बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स लेकर के आगे कि इफ यू वांट टू परफॉर्म दीज थिंग्स, सो गो फॉर मॉड्यूल सॉर्ट ऑफ अप्रोच. ओके, सो काफ़ी इजी होता है और नीट एंड क्लीन सा दिखता है आपका कोड, एंड मेंटेनेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक चेंज इन योर कोड, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट सेलेक्टर, और आप वहाँ पे जाकर उसको चेंज कर सकते हो. सो बहुत ही ईजी हो जाता है your CSS3 के साथ काम करना, एंड इन द करंट डेट we are using CSS3 only. But it's a great और हाईली डिबेटेबल टॉपिक कि भाई CSS4 आएगा कि नहीं आएगा. आई थिंक मैं CSS4 मेंशन नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स अगेन, जैसे मैंने कहा कि डिबेटेबल रहता है. कुछ लोग कहते हैं कि वी शुड स्टार्ट कॉलिंग 3 के जो सब्सिक्वेंट वर्जन है उनको CSS4 कह के बोलना शुरू कर सकते हो, या फिर आप 3 को ही मान लो कि विद फ्यू मोर थिंग्स इट विल बिकम CSS4. बट कुछ लोगों का मानना है कि देयर इज नथिंग नोन एज CSS4, सो इट्स अ हाईली डिबेटेबल थिंग. So why spend a lot of time just already debatable है. Okay, but if you talk about the draft of CSS3, वो बहुत early 1999 में ही इसका draft ready, या फिर आप कह सकते हो publish हो चुका था. draft not the final product, just a draft. ठीक है. एंड करंटली जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं हम उसको CSS3 बोलते हैं. हम ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों ही तरीके से CSS3 ही बोल जाता है कि वी आर यूजिंग CSS3 इन आवर वेब पेज. एंड HTML का वर्जन 5 चल रहा है और CSS का वर्जन 3 चल रहा है. इन दोनों के साथ इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डेवलप, बिकॉज HTML5 brings you a lot of semantics thing. For example, if you're working on header part, so now you have a tag जिसका नाम है header. If you're working on footer, so there is a tag जिसका नाम है footer. इसके पहले इतना ज़्यादा semantics से फोकस नहीं था HTML के अंदर भी, so that's why CSS भी मेंटेन करना मुश्किल था. But now it's very very easy, because for header you have header, for footer you have footer, for sidebar you have sidebar, for navbar you have navbar. So हर एक चीज़ का लिए semantics ऐड कर दिए. That's really awesome. और डॉक्यूमेंट पढ़ने में भी लगता है कि okay, you are reading some well defined module document. Okay. एंड या सारी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटीज के साथ चलता है. सो कोई भी नया वर्जन तभी अच्छा लगता है यूज़ करने में अगर वो पुराने वर्जन के साथ कंपेटेबल हो. अगर वो पुराने वर्जन के साथ कंपेटेबल नहीं होता, सो बिलीव मी, यू विल आस्क यू ट्वाइस और मे बी थ्राइस कि अपडेट करें या ना करें. ओके, so that's your basically versions of CSS. Any उसके बाद I think we have some text editor. So okay, I guess in the beginning someone asking कि भाई कौन कौन से text editors थे, तो आप text editor use कर सकते हो. जैसे मैंने VS Code यहाँ mention करा है. We have some sort of videos help कि आप कैसे उनको install कर सकते हो अपने Windows में, अपने Linux में. एंड इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड टू यूज माई टेक्स्ट एडिटर, जो मैंने बनाया था उसका नाम मैंने एडिटर दिया था, ADITOR. सो ये एक टेक्स्ट एडिटर जो जिसको मैंने C#.NET में बनाया था, और फिर सेम टेक्स्ट एडिटर को मैंने C लैंग्वेज में बनाया था. बट आई फील कि C लैंग्वेज वाला इज मच मॉडर्न और थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू C# वाला, बिकॉज इन C लैंग्वेज वाले के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल टैब्स एंड मल्टीपल एक्सटेंशंस को भी वो सपोर्ट करता है. सो या, if you're interested you can use my text editors. Otherwise go for Microsoft VS Code. Yeah, cool. Yeah, and finally we have installations for your modern browsers. Modern browsers are like Google Chrome. Hamesha Google Chrome will be at the top um, because of its JavaScript engine. मे बी, या फिर आप कह सकते हो कि अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर टेस्टेड ऑन गूगल क्रोम. बाकी दूसरे ब्राउजर्स में शायद कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो बाकी दूसरे ब्राउजर्स में टेस्ट भी नहीं होती. दे जस्ट वर्क ऑन गूगल क्रोम. सो इफ यू वांट टू एक्सेस देयर वेबसाइट यू हैव टू यूज गूगल क्रोम, right? Secondly, you can go for Firefox. Firefox is amazing. जैसे Google Chrome है, second number पे I will support Firefox. Then you have this very new browser which is Brave. I think आपने YouTube पे इसका ad देख देख कर आप थक भी चुके होगे.
Firefox and Brave are good for privacy also. Yeah, definitely. Yeah. एंड जैसा कि ये आप यूज़ करते हो विंडोज़ को, सो विंडोज़ का जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो मॉडर्न ब्राउज़र. एंड इफ यूर ऑन मैकबुक यू कैन गो फॉर सफारी. आई रेयरली सी पीपल यूजिंग सफारी फॉर टेस्टिंग पर्पस, बट yeah, you can go for that. But out of all these, my preference will be Google Chrome. If you are creating a new application, test on Google Chrome, because किसी के पास कोई और ब्राउजर हो ना हो पर Google Chrome जरूर होता है. That's the फायदा of having a big user community. Cool. All right. So any question, anything? I think that's it for this particular slide. इसके बाद थोड़ा सा practical भी देखेंगे. But ask me if any question and any doubt. Oh, that's a big one. So, being from non-tech background, I don't have much knowledge about tech. So, I want to ask you a question. Will I get job a front-end developer with a master's students using JavaScript? Yeah, yeah, definitely. Um, See, first of all, welcome to this tech world. Yeah, if you want to be a front-end developer, you have to focus on these things: HTML, CSS, and finally JavaScript. These three things is a pack. It's a pack. Okay, it will be good if you add some frameworks of JavaScript. For example, you can go for React or you can go for Angular. I prefer Angular, but वो थोड़ा सा बड़ा framework है. If you want to have a crawling sort of step, तो आप React पहले कर सकते हो. Okay, because React is not a framework, it's just a library. और वो same component को बार बार update करता रहता है, तो it's easy to write code in React. But Angular के लिए you should know a nice directory structure proper, because उस एक framework है और एक framework की तरह ही काम करता है. It has a nice directory structure, तो आपको सारे components पता होने चाहिए. And वहाँ पे हम strictly use करते हैं TypeScript. So TypeScript is a superset of your JavaScript. Okay, so Angular के लिए आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बट आई थिंक रिएक्ट में नहीं होगी. Cool. Okay, so great guys. Any other question? Anyone? So I'm back. Let me share my entire screen and let's open your VS Code. तो VS Code मेरे पास installed है. I'm on my MacBook, but जैसे मैंने कहा, I don't really suggest MacBook. You will be wondering कि ये कैसे हो सकता है, but yeah, it's happening. Okay, so let's create a brand new file on your desktop. HTML. Okay, what happened? Okay, it's creative. Okay, let me rename this one. I don't know what happened here. I don't use IDs a lot, so that's why you will find me struggling in these IDs maybe. So this is index.html. If you're very familiar with VS Code and all, you can create the files in no time. If you doc type HTML, and then you have some HTML tags here, we have something known as head tag, then we have something known as body tag. I write code on terminal. So I love to write code on terminal actually. What happened? Chat कहाँ गया? Cool. So chat मैंने साथ साथ यहाँ पे open करा हुआ है. If you want something, you can put it here.
Aman is asking, so what is the important topic in JavaScript for adding interactivity on web pages? JavaScript के अंदर see if you want to add some interactive things, you can go for jQuery. jQuery is the library of JavaScript. So वहाँ पे transactions add करना is very easy. तो जो काम आप JavaScript में couple of lines लिख करके करोगे वो same काम आप jQuery से एक single functions call करके कर सकते हो, and that will increase the interactivity. Okay, by adding animations and कैसा रखना है, smooth कर रखना है, fast रखना है, you can manage all those things. Cool. And Kamran mentioned DOM. So yeah, DOM is a um, is the hierarchical structure, right? Or you can say it's a API. So you can call a lot of API functions जो कि DOM को access करते हैं to change your HTML part. So you can change anything using DOM. Okay, DOM के पास एक अच्छी grip है. Without using, yeah, definitely you can also create websites by just using HTML. um, if you don't believe, you can watch my side project wala video, which is on both Creator पे भी मिल जाएगा और YouTube पे भी मिल जाएगा. We have a very nice YouTube channel. Let me show you. You simply say educators. YouTube पे आप सर्च कर सकते हो हमारे चैनल को. Okay, so यहाँ पे I have all those playlists um, nicely settled in different uh, you know playlist के अंदर. Otherwise, you can simply go to the Creator और वहाँ पे past streams के अंदर you will find all those past streams. Okay, so you can spend both here. I can share it now. अभी खोल ही रखा है page so I have a bad habit to forget things. So. Cool. So this is your this is my channel. Uh, instead yeah, we have a lot of things also, like if you want help on installations, so you can have the installations wala part. We have a lot of videos in installation, we have a lot of videos in purchase also, so you can spend time and bootable करना बहुत सारे fun activities भी मैंने यहाँ पे करी है, so you can binge watch my channel. It has a lot of videos, a lot of views also, so you can find, yeah, almost 2.5 lakh views होने वाले हैं. फ्री ट्यूटोरियल्स भी है, और क्या चाहिए. Cool. Let's come back and create a very minimum HTML page. और इसके अंदर हम सबसे पहले I will show you the inline, जहाँ पे आप HTML tag के अंदर ही लिख रहे हो अपने CSS को, which I really don't suggest और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता कोड देखने में, but just for now, let's say I want to write educators, ठीक है, and I want to style this one. सबसे पहले मैं आपको इसका output दिखाई देता हूँ. If I go here and say copy relative path, copy path, and let's open a browser, paste it here and see. ये छोटा सा पेज बन करके आ गया जहाँ पे you can see a word is written educators. If I थोड़ा सा zoom तो बस इतना अच्छा सिंपल सा दिखता है. बट इफ यू वांट कि नहीं थोड़ा सा इसको अच्छा सा कैची सा बना दे, तो यू कैन ऐड सम सॉर्ट ऑफ स्टाइलिंग हियर. Okay, so how you can add style, जैसे मैंने कहा था कि if you want to add style there are three ways. So first way is your inline, then second is your embedded, and third is your external. External is the best one. I always prefer external, but पहले inline देख लेते हैं, फिर embedded देख लेते हैं, फिर external पे आएंगे. So मैं क्या कर रहा हूँ, I'm simply saying style is equals to maybe you want to change the color of your text. Okay, so you can simply say color, and let's have a maybe for color you can go for this website. It says HTML uh, code, no HTML colors.
yeah, HTML colors. तो कोई तो ऐसा वेबसाइट था जो बहुत ये कलर कोड्स, तो ये वाला uh, I guess maximum of the time I use this website to pick colors. Okay, for example, I want this color. If you like this color, simply copy this value. It's a hash value. तो आप दो तीन तरीके से कलर को डिफाइन कर सकते हो. I prefer hex copy use कर सकते हो, no worries. So you can simply go and your hex value. And if you come to the page and do a refresh, see my color got changed. थोड़ा अच्छा सा कलर हो गया. Yeah. Cool. And plus अगर ये तो zoom करा हुआ preview है. If I go ऐसे, this is the 100% view. बहुत ही छोटा सा दिखता है. So if you want to increase the font size, you can do that also. Font size, and let's say I want font size only 500 pixels. That's a lot, but it's okay. Also, you need to separate these properties using semicolon, which makes it bad. Yeah, 500 pixels थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया. Maybe for my screen, let's say 100 pixels पे आ जाते हैं. We started with 500 pixels और 100 पे आ गए. Cool. So that's your inline. आप इसके अंदर इस तरह से CSS add कर सकते हो. You can add few more things. Let's say for example ये बिल्कुल extreme left में है. So we can say कि भाई text align कर दो. Text align. Don't forget to put semicolons at the end. So we're going to refresh. So see, now it comes in the center of the screen. Cool. Keep on looking your chats. थोड़ा सा पेज बार बार हट जाता है. Cool. So that's how you can actually bring your text in the center and it look nice. Okay. So same sort of thing, but if you see the code, I really don't like this sort of code जहाँ पे आप HTML tag के अंदर ही you are mentioning a lot of things. I want a neat and clean document, but this looks really messy. So other option is to put your HTML to separate your HTML and CSS by having your CSS um, embedded like in the head tag. So go to head tag and write tag with a style. Okay, for giving style there is a tag known as style. और ये सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो by saying for P for paragraph for this particular tag what we want, what CSS we want color equals to this thing, and semicolon, and then font size maybe 100 pixels करा था, and text align center. Okay, cool. Let's come here. Chat. Okay. Sir, is it possible to add the hyperlink or image to the add-on page by using this? JavaScript से हमें hyperlinks add करने हैं. You can change the anchor tag का reference or you can add the anchor tag. But आप same काम HTML में directly कर सकते हैं. So why we are going for JavaScript? Which one is more powerful between internal and external CSS? Uh, they are not battling. But if you talk about priority, so internal CSS को priority ज़्यादा मिलती है as compared to external, right? Because जो चीज़ सबसे close होती है उसको priority ज़्यादा मिलती है. So सबसे highest priority होती है आपके this one n line की. This is known as n line. फिर second नंबर पे प्रायोरिटी आती है embedded की और थर्ड पे प्रायोरिटी आती है एक्सटर्नल की. सी तो जितना ज़्यादा क्लोज है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है. और हम ऐसा नहीं कि इनलाइन यूज ही नहीं करते, वी यूज समटाइम्स. फॉर एग्जांपल
you style your you style your paragraph external css के अंदर in some different way, but you want for this particular page मेरे paragraph उस तरह से स्टाइल ही होनी चाहिए जो एक्सटर्नल में है. I want some different styling for my paragraph. तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर मेंशन कर सकते हो उन सबको. और प्लस लेट्स सपोज यू हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स, बट आपको कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की स्टाइलिंग उन्हीं सबसे अलग चाहिए, बिल्कुल अलग चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट इन लाइन सीएसएस. डेफिनेटली देयर आर मोर ऑल्टरनेटिव्स. आप डिफरेंट क्लास बना सकते हो, इसको डिफरेंट आईडी देके कर सकते हो. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप सेम पी टैग लिखो इन तीनों में, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर भी पी टैग को बनाओ, एम्बेडेड के अंदर भी और इनलाइन के अंदर भी. तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो इनलाइन वाले को दी जाएगी, फिर उसके बाद आपके एम्बेडेड को, फिर उसके बाद आपके एक्सटर्नल को. So that's the priority order. Okay, so see if I remove this one. Okay, okay, so yeah, okay, and let's do one more thing. Instead of this color, या फिर एक काम करें, इसको इटैलिक बना दें. What's it? There should be font style and we'll say italic. Okay, ताकि डिफरेंस पता लगे कि ओके हम इस यहाँ से हटा करके इधर आ गए, इन लाइन से हट करके एम्बेडेड में आ गए. तो सी if we see this change, that means हमारा एम्बेडेड वाला CSS काम कर रहा है. Cool. And yeah, again अगर आप let's suppose आप पुराने वाले वापस ले आते हो, if you just bring undo ही करना पड़ेगा. और लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ वी वांट फॉन्ट स्टाइल इटैलिक. तो सी मैंने पैराग्राफ के लिए नोटिस करना, इस चीज़ को, ये नोटिस करने वाली चीज़ है. मैंने पैराग्राफ के लिए क्या करा, एक एम्बेडेड सीएसएस लिखा हुआ है और एक मैंने इनलाइन लिखा हुआ है. ओके, अगर आपको मेरा टेक्स्ट इटैलिक में दिखा तो समझ जाना एम्बेडेड वाला काम कर रहा है, और अगर इटैलिक नहीं है, नॉर्मल लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो इनलाइन वाला वर्कआउट कर रहा है. ओके, पर एज पर आर प्रायोरिटी रूल जो मैंने बताया था, वो इटैलिक नहीं होना चाहिए. सो इफ आई गो एंड रिफ्रेश द पेज एंड it's still italic. Did I save the page? Yeah. So inline and embedded CSS बहुत heavy कर दिया है क्या website को. Yeah, these makes your website a bit slower to load. So it's not following my rule. Maybe did I make some mistake here? Okay, cool. Okay, so let's see what went wrong. We will see it. But let's see फटाफट से, because already we are up closer to the closing bells. So let me show you the external wala also, because I want कि हम एक sort of practical thing complete कर लें before the next one. So the last one is your this external CSS. So how you can add external CSS into your HTML document by using a link tag. So if you say link and a link tag, you simply mention कि भाई हम क्या add कर रहे हैं. One second, there is a question. That's why it's always prefer to write code next. Yes, yes, definitely.
We haven't actually specified anything in inline CSS. Okay, maybe that's why. Cool. Thanks, Mama. And let's come to the hyperlink column. So how we do that? We simply say link and then href. Href can be href is for hyperreference, and here we write the external CSS, the file name. So let's say main.css. It's busy hyperlink. Okay. There's one more attribute which is relation. Relation we mentioned earlier, which is nothing but your style sheet. So let's create this file main.css. Exactly वहीं पे जाता है आपका index.html exist करता है. So for paragraph, I will say color will be, let's say, black. Black पे already होता ही है. Let's say cyan. Cyan is a nice color. Okay, it will be enough to see the difference. So if I do a refresh, you see it's small and in cyan color. Alright, and if you want the text align center other though, you can mention text line center. You can say font size equals to 100 pixels. Okay, so all these things you can do. See, we are back with the educators in the center. So, बार-बार बंद हो जाता है. Cool. So yeah, that's your three type of CSS. So we see how we can create a very basic HTML document and add CSS in three ways. The first way is your inline, the second way is your embedded, and third is your external. Okay, and I show you all the difference. हम साथ साथ में इसको refresh भी कर रहे थे, and we can simply see the results accurately. Any question